सकते कि मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क था. So I am privileged that I grew up in that time period. कि मेरा जो यंगर पीरियड था मेरी जनरेशन के लोगों का वो बड़े ही ज़बरदस्त माहौल में हुआ. This was a beautiful country, no question about it, head to foot. And I had the pleasure of traveling throughout my childhood and things like that. बहुत सारे चाचे मामे cousins were military people traditionally, with Pashtun background people basically, and वो कैंटोनमेंट्स वगैरह में मेरे हॉलीडेज गुजरते थे. बाकी चाचे वाचे ब्यूरोक्रेट्स थे प्री पार्टीशन ICS टाइप के, हमेशा टाई and suit heat or cold, etc. But it was a good kind of interesting family because through my father and grandfather, and I had two grandmothers. एक मेरी grandmother अंग्रेज थी, दादी, दूसरी मेरी grandmother पश्तून थी, मरकानी कबायली from Waziristan, but beyond that from Khorasan. And so my nani was Kashmiri, first generation Iranian settlers in Kashmir. My mother was born Kashmiri woman. तो मैं सीन सेट कर रहा हूँ ताकि कॉन्वर्सेशन के लिए आपकी दिमाग में एक बैकग्राउंड बैठ जाए when I actually start explaining a few things, etc. तो वो मेरी मेमोरी बड़ी डिस्टिंक्ट थी. मेरा मतलब है कि टेलीविज़न नहीं होता था. There were of course movies, सिनेमा था, and I love movies. बाकी किताबें होती थी और कॉन्वर्सेशन होती थी, गुफ्तगू. ख़ास तौर पे जब जाना होता था चाचों के पास in the tribal country, so my father had spent most of his time in Europe, so he was always the kind of like sought after kind of lost cousin for the family. तो वो सारे इकट्ठे होते थे. The conversation, I used to love that conversation and storytelling. और घरों में भी एक टाइम था जब हम छोटे थे तो 3-4 घर इन अ रो हमारे अपने फैमिली के थे. दादी का और 2 दादियाँ, मीनिंग होता था कि एक अंग्रेज़ थी तो वो अंग्रेज़ दादी के घर के अंदर it was like going into colonial India, and the Pashtun dadi was like going into far-flung, proper tribal area in the Pashtun country. So वो सारे कज़न उस टाइप के पिस्तौल बंदूक मलक शरक सारे वो माहौल ही फर्क था सारा. So it was very interesting for a child to actually be growing up with that. फिर हमारे जो कुछ पुरानी पुपियाँ थी साथ रहती थी, घरों के साइज़ बड़े होते थे क्योंकि आबादी बहुत कम थी. There were very few people around. मेरे ख्याल में मुझे exact figures नहीं पता, but I think you safely can say that 75% probably population, less, I don't know, something like that. It was a clean place. जो उस ज़माने में सफाई काफ़ी होती थी. मुझे याद है कि ट्रक आते थे जिसके क्या उन पर लिखा होता था PWD लिखा होता था. I don't know what PWD stands for until today for instance. But वो सारी सफाई, सड़कें गंदी नहीं होती, गंद नहीं होता था. भीख मांगने वाले लोग भी नहीं नजर आते थे. चंद लोग आते थे मांगने के लिए, वो साईं दरवेश टाइप के बड़े ठाट से आते थे मांगने. एक आता था वो आके वो अपना हॉर्न बजाता था, थ्रू करके करता, कुकुड़ था ही आया मीठे चावल खाने. तो वो माँ ने उसके लिए बना के चीज़ें रखी होती थी, थिंग्स लाइक दैट. सो यू डिडंट सी beggars and things like that. And people would generally actually, I remember, dressed clean. क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन देहात से होती थी
लोग दादा मेरा लॉयर था, वाज अ बैरिस्टर, बट लाइक वो बहुत सारे गरीब लोगों के केसेस करते थे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ही वाज one of the founder members of Muslim League and a very close personal friend of Allama. वो मशहूर थी उनकी दोस्ती उस ज़माने में यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में like things. And so people would come to the house जो देहातों से आते थे, उनके बाद कोई प्रॉब्लम वाले, they're always well dressed. वेल ड्रेस से मेरा धोती सलवार कमीज, धोती ज़्यादातर होती थी, अच्छा साफ कपड़े साफ होते थे. मुझे बड़ी क्लैरिटी से याद है कि गंदे कपड़ों के अंदर बहुत कम लोग नजर आते थे. आई मीन इवन द पुअर पीपल, वो रास्ते में आपको बैगर नहीं मिलता था एक्सेट्रा. आई गो बैक टू द थिंग के जिस दिन वो आग लगी है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. दरख्त बहुत थे हमारे घरों, a lot of trees. There was across the road from where we lived were orange groves. Farmland था ना, ये agricultural area था सारा, farming country थी पंजाब सारा. And it was just totally magnificent. I mean रात को, दिन को तो आपको नीला, like a nugget, वो पत्थर शत्तर होता है, उसका नीला आसमान, unless there were actually clouds or monsoon and things like that. And the seasons were clear seasons, like clear seasons, you know, summer, monsoon, autumn. Autumn, यहाँ पे बहुत बड़ा होता था, you know, because there were lots of trees here. And क्या उसको कहते हैं कि at night I used to actually lie outside on the bed and look. That's how I got interested in physics, because I used to figure out कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, what happens up there. पूरा, because you could actually see the galaxies. I mean, like it was just so magical कि मैं आपको बता ही नहीं सकता. I mean, like it was like the universe is bearing down on it, not a drop of pollution. Just clear, oh, galaxy के बाद galaxy, star-studded sky, ऐसे. And my dad would be working late sometimes to meet deadlines and writing and so on and so forth, finishing things, and he'd see me wait late at night and come and sit with me and say what's going on. And मैं उससे पूछता था कि ये light year क्या होता है? What is a light year? Because I heard एक मेरा चाचा था पश्तून कबायली इलाके से, but a very cultured man, very well-read individual, very knowledgeable person who actually spoke several languages. Actually, he spoke Turkish, Farsi. Naturally, a lot of people used to speak Farsi at that time. इधर मेरे बचपन में ईरानी रहते भी थे, यहाँ पे पूरे ईरानी फैमिलीज थी, उनके कारोबार भी थे, ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से. और फ़ारसी काफ़ी लोग बोलते थे. मेरी माँ नॉबरी थी, शी स्पोक फ़ारसी, एंड माई सिस्टर इज़ अ फ़ारसी स्कॉलर, बट काफ़ी लोग फ़ारसी बोलते थे. फ़ारसी वॉज लाइक यू नो लाइक अ लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन, खासतौर पर हमारे नॉर्थर्न एरिया के अंदर ज़्यादा. कल्चर सारा का सारा उसके इस रीजन का जो कल्चर है उसके अंदर पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ह्यूज है. I mean, Mughals were Turkic people like Ertugrul, I mean, you know, Babur and lot, but I'll come to that later. The thing is this, कि वो जिस दिन वो आग लगी है, तो I remember there was a अजीब-o-गरीब किस्म, it was in the afternoon sometimes, must have been, because light थी, August का महीना था obviously, and suddenly everything went pitch black. और ऐसी आंधी आई है कि I mean it was just unbelievable. I don't think
people had talked about it, my mother talked about it many times afterwards कि उस तरह की आंधी नहीं देखी. हमारा एक मैंगो का दरख्त था, छोटा दरख्त नहीं, बड़ा बड़ा दरख्त. So I saw that tree coming out of its roots, और वो गिर गया नीचे. और फिर वो आंधी सबसाइड हुई है, और तो suddenly there was a glow on the horizon, a red किस्म का bubbly glow, and slowly that red glow turned, जिस तरह blotting paper पे आप ink डाल दें तो वो spread कर जाएगी, वो ऐसे करके पूरे आसमान पे spread कर दिया. पूरा आसमान सुर्ख हो गया और वो धुआं शुरू हो गया. ऐश में ये याद है. Several times many years ago I had nightmares. मुझको nightmares नहीं आती हैं, तो एक ज़माना था nightmares होती हैं. And the nightmares was that ash falling from the sky. That was a time when the Soviet Warsaw Pact, I was living in Europe that time. I was a young person, and I used to work in the media and in the British television. And तो ये टेंशन शुरू हो गई थी. Then we heard that tactical nuclear weapons were developed because the figured कि अगर वो Warsaw Pact countries attack, there is nothing to stop their armor. The NATO powers would not be able to stop the Soviet armor. So that was a very tense 6-7 months where the possibility of nuclear war was very real, kind of thing. उस period में मुझे वो nightmare आई, वो उस वाली वो जो शालमी की आग लगी. And many years later, obviously, I discovered that there were Shalmeens that was burning, and that was 1947. So that's the first time I saw dead bodies on the street was where people burned charred bodies. My father and Khushal Khan, who used to drive for him, ये घर में असला बहुत था. मेरी माँ के पास 303 राइफल थी, which she used once on a गोरखा कंटेंजर में वो बंदे मार दिए थे. हमारे कुछ घर छोड़ के 9 घर थे सारे हमारी लो में, कोठियाँ जिनको कहते हैं. वहाँ पे एक हमारे कश्मीर के बड़े, मेरी फैमिली के बड़े पुराने दोस्त थे थ्रू जनरेशन्स. वो बंदे का नाम था वीर बहान, वो हिंदू फैमिली थी. तो सडनली ये हुआ कि ये गोरखे आए जीप के अंदर, और दे हैड दिस ओल्ड मशीन गन, विकर्स मशीन गन जो राउंड टाइप की होती थी. उसके साथ इन्होंने, वो ड्राइव बड़ी लंबी थी, घर के अंदर गेट होता नहीं था, फार्म्स थे दूसरी साइड पे. उन्होंने 2 लड़कों को शूट कर दिया. वो बाद में पता चला, लोग बातें करते रहे थिंग्स लाइक दैट कि फार्मर्स के बच्चे थे, उनको उठा के इन रिटेलिएशन. सो माई मदर यूज्ड टू एक्चुअली, शी वाज ट्रेन्ड ऑन दैट, एंड वो दूसरी मोहल्ले की औरतों के साथ ड्यूटी पे होती थी शाम को विद द राइफल. She actually used that rifle because there was nobody at home. And that was the first time I saw this action, a two-way action. मैं माँ ने खिड़की के नीचे दबाया हुआ था, and she was going 303 rifle. And she was a bullseye markswoman. She was very good at that. And otherwise, if you saw her, she was the most decent woman you could never imagine in a million years. ये औरत बैठ के soldiers के ऊपर गन चला सकती. But I was a witness to that as a child. So, बाप मेरा जो है वो रेस्क्यू कर रहा होता था किताबें. पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी माय फादर सेव्ड. लाहौर के 2 प्री पार्टीशन 3 फिल्म स्टूडियोज होते थे, वो डैड ने बचाए थे. और लोगों के घरों के अंदर किताबें कि जी वो नहीं, किताबें नहीं आप चला सकते, घर चला दे. And he was saving the books. And so, but
and we were taken to my grandfather's house for, I guess, safety purpose or something. I remember this is the first time I saw dead bodies on the street. इस तरह करके चार हुए इस मरे हुए लोग. And I remember then कि एक सिख होता था, वो मेरी माँ के पास आता था कभी कभी मिलने के लिए. I think he was a farmer. So this image never left my mind in actual fact. He was just actually sitting there. वो पीढ़ी होती है ना, उसके ऊपर बैठा होता था, अम्मी बैठी थी मोड़े के ऊपर. And he was sitting like this, and he had very big hands. I remember that. I mean, because I'm a visual person, I photograph and I make stories, I make movies. So image जो है, अभी I've spent, I'm doing my first graphic novel right now, which is what I photographed Pakistan head to foot over the years. And I'm one of the very few people who are able to actually photograph women also. In tribal area में तो मेरे लिए आसान था क्योंकि रिश्तेदारी थी. But the thing is this, the most difficult thing was in southern Punjab, places like Bahawalpur and things like that, to actually photograph women. And गुजरती हुई नहीं, but focus करके बैठ के. The point of actually photographing is not just take a picture of a person, but actually have a conversation. गुफ्तगू चलती रहे तो उसके बाद खींच करना, so you actually can reflect the actual character. You can write about this sort of thing. And so I never forget images. My mind is trained to actually remember images. And that was a very bizarre period. And this Sikh guy, he had big hands. He was a farmer. And ऐसे करके उसने सिर रखा हुआ था अपना हाथ में. And सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी और सफ़ेद थी, उसने कमीज पहनी थी, तो बैठा हुआ था, बस वो सिर हिला रहा था ऐसे करके. अम्मी बैठी हुई थी, पंखा ले गई, and they had been talking, and so I never forget that. And then I remember कि कोई refugees आए हुए थे, like there were a collection of people को bureaucrats थे, चाचे मेरे सीनियर टाइप के फौजी थे, मेरे कुछ दूसरे लोग. And my dad was the anomaly because he was a writer and the rebel of the family and things like that. We were lawyers, this type. Because the household was very actually interesting. It was very. I used to remember. I remember when Mahatma Gandhi was shot. I remember photographs and newspapers saying that tasveerein वगैरह होती थी. And तो अजीब सा ये एक डिस्टर्बिंग सा टाइम था. एक दफ़ा मेरे हाथ से गोली भी चल गई थी, बिकॉज डैड हैड यूज्ड टू स्लीप विद अ रिवॉल्वर, क्योंकि टाइम ऐसा था, झगड़े फसाद हो रहे थे. एंड सो दिस वाज अ 45 revolver. We had a narrow escape because my leg would have gone if the slug had hit me, for instance. But the thing is this, करते कराते this time was over. And the school period began, and up reflecting back, I was trying to actually figure out what to actually. I just traveled the country recently, and about a year ago, and it's not the same landscape. मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ. लाहौर शहर जो था, आप इमेजिन नहीं कर सकते शहर कितना खूबसूरत शहर. आपके दिमाग में इमेज ही नहीं, ना आपको किसी ने बताया है, ना कोई बताएगा, ना कोई टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे कोई आपको तारीख के बारे में, कोई रीसेंट चीज़ों के बारे में कोई लोग बैठ के कोई जिक्र करते हैं, कोई थिंग्स लाइक अदर कंट्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, पीसफुल एंड वेरी कल्चर्ड. और ये
कुछ देर तक तो दिवाली सेलिब्रेट होती थी यहाँ पे एज अ नॉर्म, because I guess before pre-partition that was the thing, and then जब दिवाली आती थी सारे घरों पे हर जगह पे दिए शीए लगे होते थे. That was part of the thing, and then quietly it kind of disappeared. But इधर दरख्त बहुत सारे होते थे, वो trees exist ही नहीं करते. I mean जो government college से we would actually walk down sometimes and stop maybe at Firozshan's or somewhere like that. Mall Road was a very pleasant place because double layered दरख्तों की थी. ये जो assembly का वो सुई सी खड़ी की हुई है. I don't want to be political, but Mr. Bhutto ने that ugly monstrosity and things like this. But उसके इर्द गिर्द बोर्ड के दरख्त थे रंजीत सिंह के ज़माने. Can you imagine that? इस तरह छतरी की तरह से beautiful. I mean, like and it was, the assembly area was not kind of barricades. Like it looks like a goddamn war zone. I mean, I've been in battle zones in the Middle East and things like that. That's what they look like. Barriers, the big cement blocks, or tarein, or watchtowers and things like that. I mean, it was just open space. And जो पुराना शहर था जो कि अब रह ही नहीं गया बाकी. I mean, I went over there to see this Lahore project, and I was horrified. It was like a B-movie set from Avenue Studios. Because मेरी मासियाँ कश्मीरी बिरादरी वो पुराने शहर में रहती थी. I remember that city really well because हम दूसरी environment से आते थे, तो पुराने जो घर थे बड़े बड़े ऊपर स्टोरीज और उनके फ्लोर्स के अंदर वो की जाली लगी हुई, नीचे यू कुड सी नाइट्स एंड यू प्ले गेम्स एंड सो ऑन. इट वाज जस्ट ग्रेट फन. और खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त था मेरा. आई रिमेंबर माई cousins, older cousins who were much older than me, went to the army. They were the first batch of Pakistan military academy, first lot of soldiers. They were much older than I was and things, and so उनको एक उनके साथ मेरी दोस्ती बड़ी थी कि मैं छोटा होता था, मेरे से बहुत तेज तो टेक मी टू कंट्रोल वन हॉलीडेज एंड वेरी सारी थिंग्स. बट द थिंग इज दिस, तो भाटी के बाद वो मछली वाली की दुकान अभी भी है मेरे ख्याल में, उसका कोई ग्रैंड सन वगैरह चलाता है. एंड रजा को, मेरे कज़न को फिश का बड़ा शौक होता था. तो मैं रिमेंबर मुझे नहीं भूला, मैं कॉलेज में था. I think he was then deployed in Waziristan against our own people. और वो मछली खाने के लिए गए तो मैं पूछा कि तेल कितनी और आते, वो कहते हैं 4 दफ़ा में चेंज है. कस्टमर इतने नहीं होते. तो ये शहर है सारे का सारा, वहाँ पे खाने की क्वालिटी सेम बनी हुई है कि लाहौर के अंदर खाना चाहना. जनरली लोग कहते थे कि जी आपने बस फिट होना है ना, कराची वाले लोगों को सेहत से ठीक करनी है, तो लाहौर चले जाएंगे पिशावर से, अगर आप फिने फिराएँ खाबा खाएँ घास होंगे आप सब होंगे. एंड दैट वाज ट्रू. हम नलके का पानी पी के जवान हो, ये कॉरपोरेशन का. एंड द थिंग इज दिस, it was I mean when I came back first time after 11 years, I could not believe my eyes what had happened. I mean, it was unimaginable. Okay, you could actually, somebody could do this to their own place. अब तो खैर लिमिट ही क्रॉस हो गई ना, अब तो ये इसकी वो कुछ रह ही नहीं. I mean, जो पुराना शहर था वो बड़े तरीके से बना था. I mean, this city was developed by the Mughals. People like Noor Jahan and Meher Nisa, खास तौर पे औरंगजेब की जो बेटी थी, very rebellious woman. She never got married, and उसकी पोइट्री बड़ी ज़बरदस्त है. She had written, अगर आपको मैं किसी को शौक है फारसी पोइट्री पढ़ने का, उसका दीवान मल्फी है, मेहर नसा का लिखा हुआ, कभी देखना. Really powerful imagery in that poetry. And
these two women had a huge part in actually developing this city. And they were also remarkably ये काफ़ी सारी जो चीज़ें मुझे बाद में पता चली. I mean, although I was like kind of like science, I'm still like a student of science and technology. And but the thing is this, I read in my life a lot. In actual fact, I spent a lot of time reading history. So I guess like because that was an interest, because I was writing, I needed to know backgrounds and things, specifically military history, because I had projects I had to work on. So like battle tactics and then social political history. And रिसर्च रीडिंग में हमेशा ऐसे होता है कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो आपकी 10 चीज़ें और आपको रिसर्च करनी पड़ती है, बिकॉज it's just ongoing, it never stops, you know. And at the end of the day, it becomes a habit. Like but interestingly enough, हमारे घर में बचपन में रिवाज ये होता था कि जो पुरानी औरतें थीं, courtesy, my father had a lot of influence in this, जो काम नहीं करती थी, वो चुदरानियाँ थी, वो तख्त पोश पे बैठी होती थी और वो हम लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी करती थी कि ये साफ नहीं है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, etc. And but they had to tell stories. And Dad used to tell me कि ये हमारा कल्चर है, you know, इस इलाके का, रीजन, ख़ास तौर पे सेंट्रल एशिया का, जहाँ से हमारी फैमिली का ताल्लुक, ख़ास तौर पे स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट कल्चर. तो उसके साथ आपकी एजुकेशन है, उसके साथ आपकी हिस्ट्री है, उसके साथ आपकी वैल्यूज़ को वो कीप्स योर वैल्यूज़ अलाइव इन चिल्ड्रन. And it's a phenomenal actually thing. And we used to listen to those stories that, you know, some of the stories involved our elders, some about the general heroes of the time, of the period, and so on and so forth. And it's amazing कि ये जो tradition है बिल्कुल गायब हो गई, but तभी भी बहुत कम होती थी. But in my case, I actually when I actually was into reading my history very professionally, to actually research. I've been to actually from when I used to live in England, I would travel to museums at my own expense, like Cairo and Damascus and places like that. And I didn't speak Arabic, so I would have things translated with my own money, because they would translate things for you, give you space to sit down and research and do what you wanted to do. And so काफ़ी सारी चीज़ें जो थीं, ये मैंने कहानियों में चंद चीज़ें अपनी एल्डर से सुनी थी, जो घर की पुरानी औरतें थीं, जो मेरे दादे के ज़माने में थी, चुदरानियाँ हमारी घर की पुरानी, काम नहीं करती थी, जो कहानियाँ सुनाती थी, नुक्ताचीनी करती. And so they had obviously a link from this kind of, you know, storytelling कहीं ना कहीं से link होता है, और ये storytelling बड़ा significant part था culture, you know. And you know, for children, I mean, you know, it's just an amazing thing. अब जब बच्चा जवान हो रहा है, God forbid कि उसके दिमाग में क्या चले. I mean, not just in this country, but anywhere in the world. It's just kind of like, you know, in this country, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कल्चर की डेलिकेसी बच गई नहीं है. So like, you know, there is, but many other parts of the world, it's very scary. So like, I mean, you know, I've seen that America, I went first time in the 60s. It looked entirely different. America के दो चक्कर हैं, like the principal cities हैं. You have New York, you have kind of, you know, East Coast cities, and but the whole of America is actually not those cities. America's heartland country is very different country, very different country. And so
courtesy having worked in the movies, I mean, I was very privileged to be actually trained in the actual, what they call the Hollywood studio system. Where you had the major studios like 20th Century Fox, Columbia, MGM, so on. The studios were just phenomenal places of technology and knowledge. Technology, because like cinema technology is next to aerospace industry. It's the highest end technology. Lens systems, and it was just this constantly developing, like the armaments industry. So years ago when I was little, my dad used to tell me that he said we were interested in physics, even if I don't study, don't take a degree in that, but I still work on physics, and read and etc. But don't actually ever ignore technology, because our people never learn technology. And the thing is this, then he used to actually this sort of there's some elements in my book, in my graphic novel. My graphic novel का नाम है Jinn and the Magicians, Jinn और Madari. So I mean, the thing is, it's a combination of things. It's a kind of part autobiography, part kind of folklore, short stories, mysticism, spiritual, surrealist, free association. So it's a mixture. It's a kind of an experiment over time. It's based on my photographs and my sketches, and then my writing. And it's short. It's kind of not long stories, but short comments and observations and so on. And it's interesting. And questions that arise primarily. जो मेरा मतलब है कि एक शॉक वैल्यू मुझे हुई थी यहाँ पे वापस आके 11 साल के बाद पाकिस्तान में. Each time I was came here back in late 70s. I was a kid, 63, when I left this country, and then I came back in late 70s when there were last years of Mr. Bhutto's government, and my dad had died, so I went to क्या इसको कहते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर. फिर मेरे फादर की जो रिकॉर्डिंग्स थी सारी over the years that we've done, because I remember that All India Radio excuse me, used to did a broadcast on everything, and they played some of his old recordings and so on. And this was very valuable stuff, not just because he was my father, but he was he was important for the people of the country, the young people. Nothing to do with the family and Bap, this, that. And वो मुझे मिले ना, मैं टेप्स अपनी ले गया, मैंने कहा कि ये मुझे कॉपीज बना के दे दीजिए. Then I slowly discovered, एक हफ्ता गुजर गया, 1.5 हफ्ता गुजर गया, मुझे पता चला कि जी ये वो मिल नहीं. Hey, how is it possible मिल नहीं? So what transpired was that they had actually उन्होंने गायब करा दिया through rivalry. Some of the people high up sitting there, like managing director and so on and so forth, were actually dad के साथ rivalry थी, because my dad was a very different person, he was an individual of his own kind. He did not actually bend with anybody and so on. So this is unbelievable. How can that happen? So I will not go into the detail, but I stayed here. It was a difficult time for me because मेरी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज पे आने वाली थी इंग्लैंड में. It's a British film, which was personally for me was a huge success. But I did not go there because I started making Rafi Peer Theatre workshop जो मेरे भाई लोग चलाते हैं.
Salman Peerzada and Saddam and stuff. Because I wanted my dad's name to be there and for young people to actually have some sort of access to what he did and what he wrote and who he was, etc. And उसके अंदर मुझे 1.5 साल के करीब लगा, तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल. Really a lot of work, struggled with bureaucracy of the time, Mr. Bhutto's police state. Forgive me for saying that because I've experienced it personally with the political affiliations, and I apologize. My intention is not to be political. But it was a very messy period. I mean, I'm very surprised that, like this just great period of democracy, there was no such thing. It was a police state, very simple. Well, I learned police state business when I was a young person working for British television going across to Eastern Europe. हमको चिट्ठा मिला करता था लोगों से वो ये आपने कहना है, ये आपने नहीं कहना. I mean, there were bars, there were restaurants, there were other places and things like that. But everybody kind of, when they spoke to you, they looked over your shoulder. I'm a film director, I'm a writer, so I notice these things. I mean, I don't write things बनावटी चीज़ें. I write like about people. जो कुछ भी मैं character बनाऊँगा लिखूँगा, will that be a person that I know? Because human beings are not one-dimensional. Human beings are complicated people. They have layers of things in them. And so observing life is very important. I learned that a long time ago. My dad would tell me that you cannot write anything if you don't listen to me. Forget about reading. अपनी grammar ठीक करनी है तो पढ़ लें चीज़ें, but the thing is this, observation is the key. You observe. कोई हाथ किस तरह से पकड़ के बैठता है, जो बात करता है वो नाक को इस तरह क्यों करता है, ये करता है वो करता है, etc. 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 Who is he? What kind of background? What language people use? People don't talk in Salese English or Salese Urdu and things like that. People talk vernacular most of the time. And so expressions are very important. That's why I went into current affairs business mostly at an early age, because उस ज़माने में जो news होती थी वो film पे होती थी, which meant 16mm film. And so Eastern Europe was a vastly, just like chalk and cheese between West and Eastern Europe. It was अब चीज़ें change हो गई entirely. It's not the same. It was like way back in the 60s. So people didn't talk about things. It was a police state. So this was a police state during Mr. Bhutto's period. And जब मैंने रफ़ी police state workshop बनाई, I had great difficulty doing it. I sacrificed my career. I was the star of the movie. It was a Columbia release film. Huge big success for me personally. I got amazing reviews, both sides of the Atlantic. My agent had gone bananas. He said, what are you doing? You need psychological treatment. The thing is this, वो जहाज में बैठ के इधर आ गया, मार कहने के लिए इसको क्या हो गया? I said, you don't get it, this is my dad. He was a very significant dramatist of this place. वो culture में नहीं, ये शायरी वाला culture है, तो कभी ना कभी तो होगा. So like the thing is this, I have to do that. मुझे उसकी स्ट्रगल करनी पड़ी सिंगल हैंडेडली बनाने के लिए, और जब मैंने वो बना के मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल जो है इधर जो वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये एक्चुअली बहुत सारी डिस्ट्रक्शन जो लैंडस्केप की हुई है वो भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हो गई थी. I vowed not to say साहब because I don't like that word. But the thing is this, like old houses and things, they were being pulled down. ये माल रोड के ऊपर जो बाटा के जहाँ के वो है, उसके साथ ये थी सिविल एंड मिलिट्री गज़ेट का दफ्तर. The architecture was जो NCA type का, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी NCA, but beautiful architecture, domes वगैरह सारे के सारे. So Civil and Military Gazette was an old newspaper, just historical significance.
And Rudyard Kipling used to work there. For whatever it's worth, he was an international named person. Uska famous novel Kim, based in Lahore. And Kipling was उसका दफ्तर इधर था यहाँ पे उसके अंदर सिविल मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर. And but he was an insomniac. वो सारी रात फिरता रहता था लाहौर शहर. So I mean the Lahore developed by the Mughals and then by the Brits. So it was during the British period that this city actually took off because it acquired a significance for the empire. Because Sara northern area, Afghanistan, and even beyond, जो लोगों को उस ज़माने में पता भी नहीं था क्या है, beyond Afghanistan, some kind of Central Asian empire was administered from Lahore. Even Middle East was administered from Lahore. So Lahore had that importance. So consequently, किपलिंग ने कई जगह मेंशन किया हुआ है कि कोई भी खबर आपको अगर रीसेंट तरीन खबर पता करनी पड़े तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो लाहौर इज़ द प्लेस. लाहौर की बार्स या चाय खाने या दूसरी चीज़ें जो हैं वहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा वो आपको खबर बता देगा कि उधर कलकत्ते में ये हुआ था कल रात वो etc. So it had a very significant kind of a position, and writers and people from all over India started converging to this city. So it just kind of kept developing. And हमारे period में I can talk at length about Lahore in actual fact, जो कुछ भी मुझे पता है basic things and so on. Because मेरा interest बहुत फर्क होता है. I read a lot, आदत पड़ गई हुई है. और मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी रीडिंग बिकॉज आई हैड dyslexia and so I had to work double time reading a paragraph. वो लाइन्स आगे पीछे हो जाती. अब वो कर के like my training in martial arts and things like that, कर के आदत पड़ गई तो I can actually read. But even now when I'm writing, sometimes I write हो जाता है. And but I mean दरिया बड़ा खूबसूरत था यहाँ का. It was a proper river as opposed to वो गंदा नाला. And सारे कॉलेजेस की बोर्ड्स होती थी. प्रिंसिपल कॉलेज क्या थे अपना गवर्नमेंट कॉलेज नर्सरी, गवर्नमेंट कॉलेज, एमओ कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एफसी कॉलेज, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज, एक और जगह थी. उनकी बोर्ड्स होती थी जाने सारे कॉलेज टीम्स थी बिकॉज दे वर बोटिंग टीम्स. सो दे हैड कॉम्पिटिशन्स लाइक regattas they have in England and so on and so forth. So obviously British culture had a lot of influence in this part of the world. और so वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो वो सारे सिलसिले ख़त्म हो गए सारा कुछ. एंड ये क्या उसको कहते हैं कि I just didn't want to lose the thread what I was actually talking about. So like building civil military and like that they did in Karachi. And ये सारी जो सड़क आती है शिमला पहाड़ी से उधर डेविस रोड से उसके ऊपर बड़े खूबसूरत पुराने घाट. दुनिया जहान में लोगों ने प्रिजर्व की हुई चीज़ें वो बना ही नहीं सकते इस तरह की चीज़. दे कैन नॉट मेक इट. लुक एट द आर्किटेक्चर, प्रेजेंट डे आर्किटेक्चर जो बना. आई मीन लाइक इट इज I mean, it looks like Dubai. This is not Dubai. It's an agricultural country for the last 3,000-4,000 years. Things grow here. And, but, so this city was once it was set, then it was just ransacked. Then it never stopped. Then it just never stopped. It just went on and on. So अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो by all means do the development. वो कहीं और जाएगा.
you don't have to actually put everything in the same place. That's not the case anywhere in the world. England में मैं इतने साल रहता रहा, and my wife had some real estate business for a while. There, I mean, if जो घर पुराना है उसके अंदर से आप एक brick नहीं change कर सकते. You cannot actually take a brick out. They'll put you in jail. They'll fine you. You cannot do that. You can maintain the place, और maintenance के लिए भी local government आएगी अपने बंदों से. They will not charge you. They will pay. They will do their bit. All you have to do is to inform them कि इसके अंदर दरार आ गई, crack हो गया. They will turn up, they'll fix it and go away. But they will not let you do it. Preserve. मेरा मतलब traditions को रखना बड़ा जरूरी है. लाहौर के अंदर बड़ी traditions थी, हमारे सारे शहरों के अंदर traditions. I remember seeing Hyderabad when I was young. मुझे पता नहीं कितनी canals वहाँ पे आगे पीछे जा रही. I went to Hyderabad in the 90s. I threw up. I was not acclimatized. मैं अभी बाहर से आया था. वो air was so polluted. I threw up. And he was, I couldn't believe it was the same city. आप उसके पुराने घर जाके देखें. I mean, they cannot make those places anymore. लाहौर शहर के जो घाट थे, they cannot make them anymore. They don't know how to. I was filming, my films are good, which unfortunately is banned by the government. And the thing is this कि वो क्या उसको आप कहते हैं कि I was filming in the old city, पुराने घर के अंदर. इस महीने में जून जुलाई के महीने के अंदर एक पंखा चला हुआ था, and it was cool because places were built according to weather conditions. दीवारें हैं ये वो सारा. तो जब ये चीज़ें मौजूद हैं आपके पास हैं सारी, so you know like it's just demographic सारा कुछ. So and it has a lot of effect. And you know when लोगों को अगर पता ही ना हो and they're oblivious, there's nobody who's told them about this. I mean, half the people going around in this country don't have the foggiest idea of what happened before them, because most of the people were born during the time of Mr. Sharif or Mr. Bhutto. They had no knowledge beyond that. And that's unfortunate, because there is no mechanism in our system that will actually inform people. So they have some sense of their own history and traditions and so on. And abhi, what else can I say? I mean, you know, the thing is this: they talk about tourism and so on. Now, I have traveled this entire country from head to foot and sideways. मैं तकरीबन डेली मेरी डायरी होती है, मेरा लॉग होता है, साथ में लिखता हूँ कि आज मैं इस जगह में रुका था, आज इस जगह रुका था, ये हुआ था, वो हुआ था. I write every day. If I'm gone, I talk to 5 people. I talk to 5 people. एक फार्मर था, एक की साइकिल की दुकान थी, एक का ये था, एक सेलफोन्स बेच रहा था, एक कार. So 1 year afterwards, I look at it and I know exactly what happened and I can write it. But the thing is this, that population ऐसे करके swell की. अब मुझे याद है अयूब खान के ज़माने में मैं स्कूल में था, कॉलेज में जाने वाला था. So like there was used to here and out there, they started this family planning business. And घर में बातें सुनने को मिलती थी through uncles जो गवर्नमेंट में होते थे सारे. And my dad was doing some ideas for them and so on and so forth. And the television होता नहीं था, तो obviously there were some big billboards out there on the street. बड़ा एक healthy looking खुश देहाती कपल, 2 बड़े हेल्थी बच्चों के साथ इस तरह करके उनकी तस्वीरें बनी हैं कि जी 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें. और लोगों की मेरे ख्याल में ये अकल में आ गया था, बिकॉज लाइक यू नो if I have memories, so I write about them in my notes, so I don't
completely, they're not erased. So after 1 month, if I'm looking for something, I can actually rely on my own account and either memories or actually experience things. So it worked. And then I asked questions. I asked questions to my uncles many years afterwards, many years afterwards. जो कि गवर्नमेंट में थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, हायर पोजीशंस के अंदर। मैंने कहा ये चाचा जी ये क्या सिलसिला है? वह ये बड़ा सक्सेसफुल था प्रोग्राम कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने और एजुकेशन का था। एजुकेशन जो हमारी थी, ये स्कूल जो थे यहाँ पे बहुत अच्छे थे, they were the best like anywhere in the world. And so I am very grateful that I actually had the benefit of that. My generation people had the benefit of that. And society बहुत फर्क थी. I mean, lot of foreign families lived in this country, in this town. वो कोई गनशंस नहीं होती थी, छोटी सी दीवार होती थी, वो चौकीदार छड़ी लेके बाहर बैठा होता था, चरस का सिगरेट लगा, तो वो सिगरेट नीचे काट लेता था, कोई आता था फिर भी सिगरेट लगा लेता था, अपने हाथ में डंडी सी पकड़ी होती थी किसी दरख्त की शाख. There was nobody with guns, and you know, like the women would go around. यही सारी लोकल शॉप्स के अंदर शॉपिंग वगैरह करती थी, सारे सब्जी वाले उनके बाकी लोग. तो कोई 150 पौने 200 300 बंदा यहाँ पे रहता था, फॉरेन, जर्मन्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन्स. अमेरिकन्स काफ़ी थे बिकॉज पाकिस्तान had a very big alliance with the United States. And during the Yukon time, there was like they had the air base in Budbear outside Peshawar. U-2s जहाँ पे base थे, fly करते थे, spy planes. One was shot down over the Soviet Union. You may have heard Gary Powers' famous thing, and so on and so forth. Khrushchev got worked up and so on. But you know, there was a very easy place. There was like there was 4 buses that used to come down every year, full of tourists. इधर लाहौर में रुकती थी, आगे भी जाते थे इंडिया तक, बट लाहौर में बड़ी लंबी स्टे होती थी उनकी. ये YMCA जो है आपका, वो बड़ी रौनक वाली जगह थी. वो सारा एरिया जो है वो आपका जो यूनिवर्सिटी के हमारे पास है, सारा वो टॉरंटन मार्केट एक्सेट्रा, वो जेलेंस कॉफ़ी हाउस, पार्क टी हाउस, वो राइटर्स, वो सब किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज. He was very pleasant kind of like atmosphere generally. और फिर जो बड़ी vibrant Anglo-Indian community थी, very vibrant, just amazing people. Some of them look like Europeans, some of them look like us, etc., etc. And they had major contribution. I mean, you know, अगर तो मेरी generation के लोग 100 दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करें तो काफ़ी नहीं होगा. The education, the way they taught us. They were brilliant teachers, amazing teachers. I mean, they were Christians, Roman Catholics, but they never actually forced any kind of religious ideology in our heads. They just talked about learning and things like that. And they ran the railways. So, you know, railways worked perfectly. और ये जो railways हैं, ये अंग्रेज़ों ने फेंके हुए थे इस तरह, because they had no idea, the people, that suddenly they were going to be told, wrap up everything in 1 year and go back. They had no idea. मेरा मतलब है कि मुझे याद है मेरी जो दादी जी उसके घर जो अंग्रेज़ लोग थे वो आते थे काफ़ी, जो यहाँ पे रहते थे. एंड एक दफ़ा जो मैं कई दफ़ा जो लाइक आई वुड गो टू ये मुस्लिम टाउन की जो कनाल है, वहाँ पे 2-3 घर थे सिर्फ, सारे बाकी फार्म्स थे काफ़ी सारे. मुजाहिर चुंगी से लेके इछले तक कोई आबादी नहीं थी. There were few houses and farm places. दूसरी बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ क्या होती थी कि I mean you could not actually ride a bicycle, रेड़ा or gad without a light. We couldn't ride a bicycle at night without a light. There was a law. There was something called law that we were aware of. चलान हो जाए, you see. और ये दूसरा ये है कि वो लॉ तो खैर इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी हो बेकार नहीं, भाग में जाता है वो.
तो लाइक द थिंग इज दिस के ये सारे शहर में मुलायम चुंगी से लेके मॉडल टाउन तक आबादी कोई नहीं थी, बट फुटपाथ दोनों साइड पे बने। यू कुड एक्चुअली वॉक दिस एंटायर सिटी ऑन अ फुटपाथ। इधर से आप अगर माल रोड पे चले जाएं तो आप पूरा वो सारा का सारा रश्मि चौक का एरिया, उत्तर रेलवे स्टेशन तक, सारी आगे पीछे पुराने शहर तक, सर्कुलर रोड तक, सारी फुटपाथ के ऊपर। तो फुटपाथ्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, यू नो, फुटपाथ है ही नहीं। वेरी फ्यू कंट्रीज ऑन द प्लैनेट जहाँ पे फुटपाथ ही नहीं। I mean, you know, you go to cities, people love traveling. They go to cities where they can actually walk. I mean, you know, I've had the privilege of actually traveling pretty much half the world. काफ़ी सारे मुल्कों में under working conditions, either as a journalist reporting battlefronts or मेरा मतलब है कि और actually doing my work, working on film productions. And what surprised me was like countries like Thailand and Singapore impresses like that. I have not spent few days in Singapore, but just I don't like the place. But like मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे स्कूल टाइम पे ये जगह मुझे एक I was actually I remember एक वो लिखना था, ऐसे लिखना था मुझे, एंड कोई जियोग्राफी के ऊपर कोई, एंड मैंने कहा कि सबसे आसान चीज़ जो है जिसको किसी को पता ना हो, टीचर को किसी बैकग्राउंड में, वो मैं लिख देता हूँ कोई थाईलैंड या मलेशिया के बारे में, तो कुछ यू नो दीज आर कंट्रीज आई जो सडनली डिस्कवर, मुझे पता ही नहीं था मुल्कों के नाम नहीं। तो देन आई सडनली डिस्कवर तो घर में किताबें बहुत होती थी। माई हाउस वॉज लाइक अ लाइब्रेरी। I think we had about, my dad had about 3,000-4,000 books in the house, magazines वगैरह। इस शहर के अंदर बुक शॉप्स बहुत सारी थी। There were lots of book stores in this city. Magazines, जितने भी recent magazines होते थे ना, वो टेक्नोलॉजी के, साइंस के, आर्ट्स के, फैशन चीज़ों के, जस्ट जनरली लाइफ मैगजीन, पीपल, दिस दैट एंड अदर, और फिर फारसी की पब्लिकेशंस, फिर अपनी पब्लिकेशंस मिला के तो बुक स्टोर्स बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग एक्चुअली किताबें, जो मॉल रोड पर किताबों की दुकानें थी सारी, वाइन शॉप्स भी थी काफ़ी सारी। मेरा मतलब इतने लोग शराबें नहीं पीते थे जितने आप पीते हैं, फॉर इंस्टेंस, बिकॉज इट वाज ओपन। आई मीन ये मॉल रोड के ऊपर कोई 9 वाइन शॉप्स थी, कोई 10 बार्स थी। एवरी रेस्टोरेंट इट्स हैड अ बार। And Fridays को, if you were in the area like Mall Road का area, तो you would just hear music, because ये जो असेंबली चेम्बर्स की बिल्डिंग है, वो अलफला बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उसके पीछे एक नाइट क्लब थी, बड़ी मशहूर नाइट क्लब थी, उसका मैं नाम भूल गया। तो वो डबल डेकर बसें होती थी, तो यू कुड एक्चुअली सी वो वहाँ पर डांस बैंड शैंड हो रहा होता है, सारा कुछ एक्सेट्रा। ये तो सारा आपका ये जिना लाइब्रेरी है, उस कॉस्मोपॉलिटन क्लब, दे हैड देन प्लाजा सिनेमा के ऊपर मार्सडन कैनेडीज स्कूल ऑफ बॉल रूम डांसिंग, एंड देन ऑन द अदर साइड ऑफ फिरोजशाह बिल्डिंग देयर वर सम वेरी प्रिटी रेस्टोरेंट्स देयर। वो कार्बन कॉपी लाइक प्रेजेंट डे लॉस एंजलिस के अंदर उस तरह के रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट का नाम था अर्जेंटीना, वो मेरे डैड का फ्रेंड था मिस्टर लोधी, उसका रेस्टोरेंट था। असलम परवेज एक्टर जो होता था उसका बड़ा भाई था। दे वर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड ही वाज अ वेरी काइंड ऑफ कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग, एंड ही हैड दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। उसकी बार टेरेस थी, ओपन टेरेस थी और थिंग्स लाइक दैट, सो म्यूज़िक होता था। तकरीबन हर रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप या टी शॉप के अंदर पियानो ज़रूर होता था। ये सामने जो मस्जिद शुहदा कहलाती है, टैक्सी रैंक होता है, यहाँ पर टैक्सियाँ रुकती थी, और वो टैक्सीज़ होती थी अमेरिकन गाड़ियाँ, प्लेमथ सेंट डॉजेस, बड़ी गाड़ी, जापानी गाड़ी को नहीं होती थी। हम तो जापानी टॉय भी नहीं लेते थे, हमको पता है 2 नंबर टॉय, जापानी टॉय। एंड सो द थिंग इज़ दिस कि वो मस्जिद शुहदा बनी है इस तरह से कि आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट। हम ये स्कूल से आ रहे थे वापस माल रोड से, we had actually stopped
बाइसिकल्स पे इधर ये जो टॉरंटन मार्केट है वहाँ पे हमने रुक के कोई पता नहीं हमने कोई जूस वूस पिए कोई करके 3-4 लड़के थे एंड वी वर कमिंग ऑन बाइक्स एंड वहाँ पे रीगल सिनेमा के चौक के ऊपर मेजर था उसने हमको रोक दिया। वहाँ पे ट्रक 2 खड़े हुए थे फौज के और वो दूसरी साइड के ऊपर एक हाउलिंग मॉब था लोगों का मौलवियों का एंड दैट वाज सम मूवमेंट आई थिंक दैट वाज कोई अयूब खान के पीरियड में कोई था वो आई डोंट नो वो कादियानी कोई आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। तो उसने मुझे याद है मेजर ने लाइन ड्रॉ की है चौक के साथ सड़क के ऊपर। उसने कहा जिसने जन्नत में जाना है वो ये लाइन क्रॉस कर। उन्होंने लाइन क्रॉस की है सोल्जर्स ओपन फायर तो 3 या 4 गोलियां चली हैं ठक ठक ठक। वो जो लोग दौड़े हैं बीडन रोड के अंदर मैंने देखा है वो मेजर ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ हमको उतार दिया साइड में। उन्होंने कहा टैक्सियाँ खड़ी हैं गेट अंडर द टैक्सीज के नीचे से देखा तो लाइक बीडन रोड पे ऊपर से औरतों ने ईंटें मार दी क्राउड दौड़ते आई रिमेंबर दैट। सो देन इट बिकेम वो वहाँ पे मस्जिद बन गई एंड कॉमर्स विश्वविद्यालय। One incident that I wrote about recently, I remember that very well. बीडन रोड के चौक के ऊपर एक फ्रूट की दुकान वो ओपन में रखा हुआ दुकान नहीं थी उसकी 2-3 टेबलें थी। वो पहलवान था जा रहा उधर बैठता था प्री पार्टीशन बदमाश था पर उस जमाने के बदमाश जो थे वो बहुत टाइप के थे नॉट लाइक इसको रेसलर भी था वेरी स्ट्रॉन्ग गाय वाज वेरी kind to the students who were in sports. We were in sports and so saying you do so will John बनाया करो सेक्टर्स और सारा करते हैं and he was a very honorable man. You know, he didn't like it. I remember that कि एक दिन वो थी जो हम गए हुए थे ये खड़े हुए थे बाहर उसके waiting for a friend to join us who was this guy Lobo's son. लोबो की दुकान थी वो अब भी शायद है दुकान तो है वहाँ पर I don't know whether it's called Lobo or not. उसके साथ असले की दुकान भी थी वहाँ पे एंड लोगों की दुकान और लोगों पियानो इट वाज 2-3 floors of pianos and we were waiting for him to come out so we could go out and just walk around and go to Ron's garden something जो चीज़ें करते थे उस जमाने। लड़कियाँ जा रही थी चलती हुई लड़कियाँ बड़ी खुली फिरती थी यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। एंग्लो इंडियन लड़कियाँ थी फॉरेन लड़कियाँ होती थी हमारी लड़कियाँ होती थी वो जस्ट ऑल ओवर द प्लेस एंड मूवीज़ में जाती थी बेशुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 लड़कियाँ जा रही थी वो गुजरी हैं वहाँ से तो वी न्यू द पीपल फोर्ड क्या उसको कहते हैं आप क्या नाम था उसका फोर्ड का थंडरबर्ड नई गाड़ी आई हुई थी वो स्पोर्ट्स बाइक वो 2 लड़के थे वो मच ओल्डर देन अस देन बट वी न्यू ऑफ देम दे ऐसे करके उन्होंने 2 चक्कर काटे इर्द गिर्द। झारा पहलवान अपनी असले की दुकान से बाहर निकला सफ़ेद शर्ट उसने पहनी होती थी सफ़ेद धोती बिल्कुल नीट। उसने देखा इन लड़कों को चक्कर लगाते उसने गाड़ी खड़ी कर एंड वाज वेरी रूड टू अस। ही सेड कि हाउ डेयर यू स्टैंड देयर नॉट से हमने गाड़ी खड़ी कर सब बाहर निकल आर्ग्यू थे। इधर एसपी होता था लाहौर के अंदर आयरिश गाय कॉल्ड टिबलेट वो पंजाबी वाला फ्लूट होता है लाइक मोस्ट ऑफ द इंग्लिश who lived there except for my grandmother. I mean she could understand it but she was like most English people she would just not have very bad accent. पश्तो का और उर्दू का सारा था उसको समझाती कभी अपनी मेड को कि ants will come here, don't drop them. फिर ऐसे होता है कि फिर कीरी हो जाता है don't do this kind of thing. That's what her language was like. But the thing is that Tiblet ने अपने बेटे को अंदर कर दिया था जिस बेटा was our classmate. For doing what? For breaking the traffic law. There was no traffic. तो वो लाइट साइड को क्रॉस कर गया वो लाइट भी वो सिपाही खड़ा होता है स्विच ऑन ऑफ करना एंड उसने अपने बेटे को अंदर कर दिया एंड
बेचारे ने इनको बाहर निकाल लिया, टिबलेट टर्न अप, वो लड़कियां चली गई, उनको पता ही नहीं क्या हुआ क्या। एंड उन्होंने टिबलेट ने कहा कि इसको आप जाने दें, I will deal with that. He said no. He said something which actually stayed stuck in my head. He said, इन्होंने पता नहीं है साढ़े शहर दियां कुड़ियां ये किथों आए, साढ़े शहर दियां कुड़ियां। Can you imagine that? There were hundreds of girls who used to go to school and colleges on bikes. वो आपको लेडी बाइसिकल ही नहीं नजर आती। Every morning, hundreds, like बाइसिकल के ऊपर वो कॉलेज से स्पोर्ट्स करनी, वापस आना, कोई गाड़ी नहीं देख रहा होता था बैठ के कि शाम पड़ गई है, 7 बज गए हैं, आई नहीं वापस नहीं। You know, like there was nothing like this. And then it didn't take long to actually things to start taking a nosedive. You know, मेरा चलान हो गया था साइकिल का विदाउट लाइट, घर पे कोई नहीं था, हवलदार आया चलान लेके घर पे बाइसिकल, मैं अकेला था घर पे। वो मेरा मतलब ये जो घर पे बंदे काम करते थे वो भी कोई नहीं था, एक मेड थी घर पे। उसने मुझे आगे मेरा पूछा है कि मैंने कहा मैं हूँ, उसने कहा आप अंडर अरेस्ट है। और मैंने चलान का परवाह ही नहीं की, मैंने कहा बाइसिकल का चलान विदाउट लाइट। मैंने मेरे दादे के घर गए हुए थे, मैंने फोन कराया, माय cousin who was much older than me, a major in the army, he picked up the phone. मैंने कहा बाबा जी से बात कराना, ये सिपाही मुझे पकड़ने के लिए आए। He said, how come? मैं कहा मेरे चलान हो, तो बाबा जी he talked, he said, put him on the phone. I put him on the phone. वो कहते ठीक है सर, कहते चल, उसको बात करने उन्होंने कहा कि आपको जेल में ले खाने। My grandfather said, why did you break the law? जब आपको पता है कि आपने लाइट के बगैर नहीं चलाना, आप क्यों गए बगैर? Can you imagine this? Can you imagine somebody telling their child today? वो कहेंगे कि जरूरत कैसे हुई, इसको मारे पुलिस वाले। So the point is this is the kind of the atmosphere. It was not that things did not exist here. It was not that there was a civic sense. It was not that there was cleanliness. It was not that there was beauty all around. It was not that there was actually fantastic education around. ये जो education जो mess up हुई है, this happened in the government of the kind of Awam. Everybody who came here and played games with experimenting with things. I mean, education के अंदर चंद चेंजेस, ऑब्वियसली ब्रिटिश पीरियड की एजुकेशन, उसके अंदर चंद ब्रिटिश प्रोपेगेंडा की चीज़ें थी, उनको आप माइनस कर दें। Why do you want to screw the entire education thing? And why do you want to actually minimize your people from, make it impossible for your people to actually gain knowledge? I mean, it's a gift if people can speak several languages. Diversity है, यहाँ पे तो वैसे ही एडवांटेज है, लोग फारसी बोलते हैं तो फारसी बोलनी बंद करा, आप पश्तो बोलते हैं तो पूरी तारीख है पश्तून लोगों की, एक कल्चर है, एक डिटेल्स है, म्यूजिक है, पोइट्री है, उसका जिक्र कौन करता है? You don't talk about that. Except if you go to Peshawar, you will hear somebody TV के ऊपर को पश्तो में बातें कर। But and then there is Punjabi, there is Sindhi, there's just diversity already in languages. So if your people can speak 10 languages, fantastic. Why not? अगर एक जुबान आपके पास एक इन्फ्लुएंस है, मेरा मतलब एक तारीख में आपके एक इन्फ्लुएंस है। The fact is that Britain ruled this country for over 100 years. That's a reality. That happened. 100 साल हुकूमत की है और बड़े तरीके से की है. They didn't do anything new. They just took over the Mughal system and modernized it. Same system. And people in this part of the world didn't have a chance. They didn't have stand-up prayer. It was between either the British or the French.
Because उनका mindset आगे निकल गया. It had nothing to do with weapons. To do with how people think. I mean, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड के अंदर ही उधर से अंग्रेजों को मार पड़ी, अमेरिका से बाहर निकाला, इधर उनको एम्पायर में. And how did they end up having every European country had an East India Company. I mean, Portuguese had an East India Company. The French had an East India Company. The Dutch had an East India Company. It was just that Britain had more clout and the most powerful navy because they had defeated the Spanish Armada, the biggest navy in the world. And इधर का इलाका जो था, इधर वो लोग जो थे, they were not seafaring people. They were nomadic warriors like Artugrul. उसी क्लैन के लोग थे. ये जो सुलेमान शाह था, ये खुरासान से गया था, तुर्की. They made that country. It was called Rome. Jalaluddin Rumi, because Chinggis Khan के हमले से दौड़े भागते थे. Rome गया था, because it was a Roman territory. So like these Turkic warrior clans from Fargana Valley, from Khorasan, converged. I mean, Seljuk clan उनका rule करता था Central Asia के अंदर. The biggest empire the world had ever known actually was the Khorasan Empire. I mean, it was the biggest empire on planet Earth in the 11th century. After the next was the Chinese Empire, the Qing dynasty, the Golden Dynasty. But the Chinese were not as powerful like the Seljuks of Khorasan, because they were warriors. And ये बड़ी fascinating तारीख है इस region की. And we, through our wisdom, have decided to remain cut off. We have, in our wisdom, decided that our children, younger people, should have no knowledge. ये हमारी wisdom. So just it's 50-minute flight from here to Uzbekistan. My actual family migrated from Fargana Valley, Uzbekistan during the war. A bloody war, because we got documentation. We got shajara, which actually old parchment papers. British Museum people turned up, asked my mother, the family to sell it, they refused. They actually उनको रिपेयर करके दे के गए. उसके अंदर 400-600-500 साल पुरानी तारीख है वो भी. And our name became Peer because some of them were actually spiritual people. They were not like Darwish type, but they were knowledgeable people who actually preach spirituality and stuff like that. And then they would go to Kashmir, but most of them were warriors, actually. And my Dadi was born in Khorasan. They migrated to Uzbekistan and then Kashmir and so on and so forth. But the thing is that ये तारीख जो है सारी interlinked है. ये just these boundaries are man-made, and cultures are it's ये लोगों की blood lines हैं, लोगों का DNA, culture, your cultural connections, your like Iran. I mean, it's such a shame that we have 500-mile border. I mean, like मैंने पूरा बलूचिस्तान और स्ट्रिप ड्राइव किया, पूरा right next to Iran border, all the way down to the line. Some years back, and मैं पूरा मुल्क ये ड्राइव किया, पूरा मुल्क फोटोग्राफ किया, बलूचिस्तान फोटोग्राफ किया, वहाँ पर मैंने औरतों को फोटोग्राफ किया, बच्चियों को फोटोग्राफ किया. I'm one of the very few male people who've been able to photograph women in these environments and talk with them, ask them questions and take pictures. Very privileged. Very, very highly privileged. I honor that a great deal. And I just always had admiration for people. Just admiration for them and their resilience and their actual real soul within them. They're good people, no question about that. Deprived of every benefit in life, taken over by morals. इतना भी शेयर नहीं करना चाहते.
I mean, and call yourself Muslim. Musliman का दर्जा बहुत बड़ा होना चाहिए, basically, if you actually follow the line of the Prophet of Islam, Rasulullah. I mean, I don't want to be religious or any such thing, but the point is this, that so many people are Muslim, this is an Islamic Republic, and so on, so there's so many mosques, and that people pray 5 times a day, and so on and so forth. So, I mean, the thing is this, that being Muslim actually places some responsibilities on you as a human being. And you cannot be, so say to yourself that, but that's the way it is. And it shouldn't be. It's in the hands of people to actually change things by the way they act, not through violence. That's not a way out. But the thing is that, you know, people have to be, young people, must be exposed to knowledge. I mean, it is the duty of people to actually inform people, like actually excite their imagination. So, उनका जो stagnant imagination है, वो चल सके, उसके अंदर वो current आ सके. I mean, so they can actually go out and develop things and do stuff, which is interesting. Bureaucrats थे, चाचे मेरे senior type थे, फौजी थे, मेरे कुछ दूसरे लोग. And my dad was the anomaly because he was a writer and the rebel of the family and things like that. The lawyers, this type. The household was very actually interesting. It was very. I used to remember. I remember when Mahatma Gandhi was shot. I remember photographs and newspapers के अंदर तस्वीरें वगैरह होती थी. And तो अजीब सा ये, I mean, एक disturbing सा टाइम था. एक दफ़ा मेरे हाथ से गोली भी चल गई थी. Because Dad had to sleep with a revolver. तो वो टाइम ऐसा था. Ribs hard हो रहे थे. And so this was a 45 revolver. We had a narrow escape because my leg would have gone. The slug had hit me, for instance. But the thing is this, this time was over and the school period began. And after reflecting back, I was trying to actually figure out what to actually, I just traveled the country recently, and about a year ago. And it's not the same landscape. मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ. I mean, लाहौर शहर आप इमेजिन नहीं कर सकते शहर कितना खूबसूरत है. आपके दिमाग में इमेज ही ना आपको किसी ने बताया है, ना कोई बताएगा. ना कोई टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे कोई आपको तारीख के बारे में, कोई रिसेंट चीज़ों के बारे में कोई लोग बैठ के कोई जिक्र करते हैं, थिंग्स लाइक अदर कंट्रीज एंड सो ऑन सो फॉर्थ. बट आई मीन इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, यू नो, पीसफुल एंड वेरी कल्चर्ड. और ये कुछ देर तक तो दिवाली सेलिब्रेट होती थी यहाँ पे एज अ नॉर्म. Because, you know, I guess before pre-partition that was the thing, and then, you know, जब दिवाली आती थी, सारे घरों पे हर जगह पे AC लगे होते थे. I was part of the thing, and then it quietly it kind of disappeared. But इधर दरख्त बहुत सारे होते थे, वो trees exist ही नहीं करते. I mean, जो government college से we would actually walk down sometimes and stop maybe at those suns or somewhere like that. Mall Road was a very pleasant place because double layered dirt होगी थी. ये जो assembly का वो सुई सी खड़ी की हुई है. I don't want to be political, but Mr. Bhutto ने ugly monstrosity and things like this. But उसके इर्द-गिर्द बोर्ड के दरख्त थे, रंजीत सिंह के उम्र. Can you imagine that? इस तरह छतरी beautiful. I mean, you know, like and it was, the assembly area was not kind of barricades. Like it looks like a goddamn war zone. I mean, I've been in battle zones in the Middle East and things like that. That's what they look like. You know, barriers, the big cement blocks, or tarein, or watchtowers and things like that. I mean, it was just open space. And जो पुराना शहर था जो जब रही नहीं गया बाकी,
I mean, I went over there to see this Lahore project, and I was horrified. It was like a B-movie set from Amazon Studios. Because मेरी मासियाँ कश्मीरी बरादरी वो पुराने शहर में रहती. I remember that city really well because हम दूसरी environment जाते थे तो पुराने जो घर थे बड़े बड़े ऊपर स्टोरीज उनके फ्लोर्स के अंदर वो इनकी जाली लगी हुई नीचे कुर्सी नाइट्स एंड प्ले गेम्स एंड सो ऑन. It was just great fun. खाना पीना बड़ा जबरदस्त था मेरा. I remember my cousins, older cousins who were much older than me, went to the army. They were the first batch of Pakistan military academy, first order soldiers. They were much older than I was, and things, and so उनको एक उनके साथ मेरी दोस्ती बढ़ी थी कि मैं छोटा होता था उनसे बहुत देर से take me to cantonments or these other things. But the thing is कि बाटी के बाद वो मछली वाली दुकान अभी भी है मेरे ख्याल में उसका कोई grandson वगैरह चलाता है. And रज़ा को मेरे कज़न को फिश का बड़ा शौक होता था. तो मैं नहीं पढ़ा मैं कॉलेज में था. I think he was then deployed in Uzbekistan against our own people. और वो मछली खाने के लिए गए तो पूछा कि तेल कितनी और आलू कहते $4 मछली कस्टमर इतने नहीं होते. तो ये शहर है सारे का सारा वहाँ पे खाने की क्वालिटी सेम बनी हुई है कि लाहौर के अंदर खाना चाहना. जनरली लोग कहते थे कि आपने बस फिट होना ना कराची वाले लोगों को सेहत से ठीक करनी है तो लाहौर चले जाएंगे आप पिशावर चले. अगर आप खाने बनाए खापा खाएँ बास हो गए आप सेट हो गए. हम नलके का पानी पीते जमाना corporation. And the thing is this, it was, I mean, when I came back first time after 11 years, I could not believe my eyes what had happened. I mean, it was unimaginable. Okay? You could actually, somebody could do this to their own place. अब तो खैर लिमिट ही क्रॉस हो गई ना आपकी इसकी वो कुछ रह ही नहीं. आई मीन जो पुराना शहर था वो पूरे तरीके से बना था. आई मीन दिस सिटी वाज डेवलप्ड बाय द मुगल्स. पीपल लाइक नूरजहान एंड मेहरनिसा, खासतौर पर औरंगजेब की जो बेटी, वेरी रिबेलियस वुमन, शी नेवर गॉट मैरिड. एंड उसकी पोइट्री बड़ी ज़बरदस्त है. अगर आपको मैं किसी को शौक है फारसी पोइट्री पढ़ने का तो दीवान मर्फी है मेरे में सारा लिखा हुआ तो देखना powerful imagery in that poetry. And these two women had a huge part in actually developing this city. And they were also remarkably ये काफ़ी सारी जो चीज़ें मुझे बाद में पता चली. I mean, although I was like kind of like science, but I'm still like a student of science and technology. And the thing is this, I read in my life a lot. In actual fact, I spent a lot of time reading history. So I guess that because I was an interest, because I was writing, I needed to know backgrounds and things, specifically military history, because I had projects I had to work on. So like battle tactics and then social political history. And research reading में हमेशा ऐसे होता है कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो आपकी 10 चीज़ें और आपको रिसर्च करनी पड़ती है. Because it's just ongoing, it never stops, you know. And at the end of the day, it becomes a habit. Like, but interestingly enough, हमारे घर में बचपन में रिवाज ये होता था कि जो पुरानी औरतें थीं, courtesy my father had a lot of influence in this, जो काम नहीं करती थी, वो चुतरानियाँ कट पोस्ट पे कटी होती थी और वो हम लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी करती थी कि ये साफ नहीं है, वो गलत है, ये ठीक है.
etc. And but they had to tell stories. And that is the terming in our culture. इस इलाके का रीजन खास तौर पे सेंट्रल एशिया का जहाँ से हमारी फैमिली का ताल्लुक खास तौर पे स्टोरी टेलिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई कल्चर। तो उसके साथ आपकी एजुकेशन है, उसके साथ आपकी हिस्ट्री है, उसके साथ आपकी वैल्यूज़ को वो कीप्स योर वैल्यूज़ अलाइव इन चिल्ड्रन एंड इट्स अ phenomenal actually, and we used to listen to those stories. Like, some of the stories involved our elders, some about central heroes of the time, of the period, and so on and so forth. And it's amazing कि ये जो tradition है बिल्कुल गायब हो गई थी, but तभी भी बहुत कम होती थी. But in my case, I actually when I actually was into reading my history very professionally, to actually research. I've been to actually from when I used to live in England, I would travel to museums at my own expense, like Cairo and Damascus and places like that. And I didn't speak Arabic, so I would have things translated with my own money because they would translate things for you, give you space to sit down and research and do what you want to do. And so काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ये मैंने कहानियों में चंद चीज़ें अपनी एल्डर से सुनी है कि जो घर की पुरानी औरतें जो तो मेरे दादे के ज़माने जो पुरानी हमारी घर की पुरानी काम नहीं करती जो कहानियाँ सुनाती थी और कैसे नहीं करती. And so they had obviously a link from this kind of storytelling कहीं ना कहीं से link होता है. और ये storytelling बड़ा significant part of the culture. And children, it's just an amazing thing. अब जब बच्चा जवान हो रहा है, God forbid कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. I mean, not just in this country, but anywhere in the world. It's just kind of like, in this country, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कल्चर की डेलिकेसीज बच गई नहीं है. There is but many other parts of the world it's very scale. So I mean, I've seen that America, I went first time in the 60s. It looked entirely different. America के दो चक्कर हैं, एक तो principal cities हैं. You have New York, you have kind of East Coast cities, and but the whole of America is actually not those cities. America's heartland country is a very different country, very different country, and so courtesy having worked in the movies, I was very privileged to be actually trained in the actual, what they called the Hollywood studio system. Where you had the major studios like 20th Century Fox, Columbia, MGM, and so on. The studios were just phenomenal places of technology and knowledge. Technology, because like cinema technology is next to aerospace industry. It's the highest end technology, lens systems, and it was just constantly developed, like the armaments industry. And so years ago when I was little, my dad used to tell me that he said he was interested in physics, and even if I don't study, don't have a degree in that, but I still work on physics, and read and etc. But don't actually ever ignore technology, because our people never learn technology. And the thing is this, then we used to actually this sort of, there's some elements in my book, in my graphic novel. My graphic novel का नाम है Jinn and the Magicians. Jinn और बताई.
I mean, like the thing is, it's a combination of things. It's a kind of part autobiography, part kind of like, you know, folklore, short stories, mysticism, spiritual, I mean, surrealist, free association. So it's a mix, it's a kind of an experiment over time. It's based on my photographs and my sketches and then my writing. And it's short, it's kind of like, not long stories, but short comments and observations and so on. And it's interesting. And questions that arise primarily, जो मेरा मतलब है कि एक शॉक वैल्यू मुझे हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान के 11 साल के बाद पाकिस्तान में each time I was like came here back in late 70s. I was a kid, 63, and then I left this country, and then I came back in late 70s when the last years of Mr. Bhutto's government, and I was my dad had died, so I went to क्या कहते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के वो मेरे फादर की जो रिकॉर्डिंग्स थी सारी over the years that he done because I remember that all India radio excuse me used to do did a broadcast on the thing, and they played some of his old recordings and so on. And this was very valuable stuff, not just because he was my father, but he was like, you know, he was important for the people of the country, very young people. You know, nothing to do with the family involved, you know, this, that, yeah. And so वो मुझे मिले ना, मैं डेट्स अपनी ले गया, मैंने कहा कि मुझे कॉपीज बना के दे दीजिए. Then I slowly discovered, एक हफ्ता गुजर गया, 1.5 हफ्ता गुजर गया, मुझे पता चला कि थी ये वो मिल नहीं. And how is it possible मिल नहीं? So what transpired was that they had actually उन्होंने गायब करा दिया through rivalry. Some of the people high up sitting there, like managing director and so on and so forth, were actually dad के साथ rivalry थी because my dad was a very different person, an individual of his own kind. He did not actually outbend with anybody and so on. So this is unbelievable. How can that happen? So I will not go into the detail. But I stayed here. It was a difficult time for me because मेरी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज पे आने वाली थी, England, it's a British film, which was personally for me was a huge success. But I did not go there because I started making Rafi theatre workshops. जो मेरे भाई लोग चलाते हैं, Salman Peerzada and stuff. I wanted my dad's name to be there and for young people to actually have some sort of access to what he did and what he wrote and who he was, etc. And उसके अंदर मुझे 1.5 साल के करीब लगा तकरीबन, 2 साल 1.5 साल. Really a lot of work, struggle with bureaucracy of the time Mr. Bhutto's police state. Forgive me for saying that because I experienced it personally. And I apologize, I thought my intention is not to be political. But it was a very messy period. I mean, people, I'm very surprised that, you know, like, it's just very democracy. There was no such thing. It was a police state, very simple. Well, I learned police state business when I was a young person working for British television going across Eastern Europe. But to come in, I thought that we were here to go to ये आपने कहना है, ये आपने नहीं कहना. I mean, there were bars, there were restaurants, there were other places and things like that. But everybody kind of, you know, when they spoke to you, they looked over your shoulder. I'm a film director, I'm a writer, so I notice these things. I mean, you know, I don't write things, banality things. I write like about people. जो कुछ भी मैं character बनाऊंगा, लिखूंगा, would that be a person that I know? Because human beings are not one-dimensional. Human beings are complicated. They have layers of things in them.
observing life is very important. I learned that long time. My dad would tell me that you cannot write anything if you don't listen to it. Forget about reading. अपनी grammar ठीक करनी है, पढ़ने चीजें, but the thing is this, observation is the key. You observe. कोई हाथ किस तरह से पकड़ के बैठता है, जो बात करता है, वो नाक को इस तरह क्यों करता है, ये करता है, वो करता है, etc., etc., etc. Who is he? What kind of background? What language people use? People don't talk in cities English or cities Urdu and things like that. People talk in active emotions. And so expressions are very important. That's why I went into current affairs business mostly at an early age, because उस ज़माने में जो news होती थी वो film होती थी, which meant 16mm film. And so Eastern Europe was a vastly, I mean, just like chalk and cheese between West and Eastern Europe. There was अब चीज़ें change हो गई entirely. It's not the same. It was like way back in the 60s. So people didn't talk about it. So it was a police state. So I mean, this was a police state during Mr. Bukhar's period. And जब मैंने रफी पीर के workshop बनाई, I had great difficulty doing it. I sacrificed my career. I was the star of the movie. It was a Columbia release film. Huge big success for me personally. I got amazing reviews, both sides of the Atlantic. My agent had gone banana. He said, what are you doing? I mean, psychological treatment. I mean, the thing is this, वो job में बैठ के भी लाते हैं. मेरी माँ कहने लगी इसको क्या हो गया? I said, you don't get it. This is my dad. He was a very significant dramatist on this place of culture में नहीं, ये शायरी वाला culture है, but कभी ना कभी तो होगा. So like the thing is this, I have to do that. मुझे उसकी स्ट्रगल करनी पड़ी सिंगल हैंडेडली बनाने के लिए. और जब मैंने वो बना के मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल जो है जो वो अजीब सा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये एक्चुअली बहुत सारी डिस्ट्रक्शन जो लैंडस्केप की हुई है वो 2000 के ज़माने में शुरू हो गई. I mean, I vowed not to say slap because I don't like that word. But the thing is this, you know, like old houses and things, they were being pulled down. ये माल रोड के ऊपर जो बाटा के जो है उसके साथ ये थी सिविल एंड मिलिट्री गज़ेट का दफ्तर. The architecture was जो NCA type. You know, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी NCA, but beautiful architecture, you know, dorms वगैरह सारे के सारे. So Civil and Military Gazette was an old newspaper, historical significance. And Rudyard Kipling used to work there. For whatever it's worth, he was an international name person. His famous novel Kim, based in Lahore. And Kipling was उसका दफ्तर इधर था यहाँ पे उसके अंदर Civil Military Gazette की बिल्डिंग के अंदर. And but he was an insomniac. वो सारी रात में पर लॉस है. So I mean the Lahore developed by the Mughals and then by the Brits. So it was during the British period that the city actually took off because it acquired a significance for the empire. Because Sara northern area, Afghanistan, and even beyond, जो लोगों को ज़माने में पता भी नहीं था क्या beyond Afghanistan, some kind of Central Asian empire was administered from Lahore. Even Middle East was administered from Lahore. So Lahore had that importance. So consequently, Kipling ने कई दफ़ा मेंशन किया हुआ है कि कोई भी खबर आपको अगर रिसेंट तरीन खबर पता करनी पड़े तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो लाहौर इज़ द प्लेस. लाहौर की बार या चाय खाने या दूसरी चीज़ें जो है वहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा वो आपको खबर बता देगा वो बिल्कुल खतरे में नहीं होगा काला वो etc. So it had a very significant kind of position
and writers and people from all over India started converging. So it just kept developing. And हमारे period में, I can talk at length about Lahore as a fact, जो कुछ भी मुझे पता है basic things. So because मेरा interest बहुत सारे होता है. I read a lot other पढ़ भी रही है. और मेरे लिए problem होती थी reading because I had dyslexia, and so I had to work double time reading a paragraph. Line तो आगे पीछे हो जाए. अब काट के like my training in martial arts and things like that, काट के other party so I can actually read. But even now when I'm writing, sometimes I write, oh yeah, that's it. And but I mean, दरिया बड़ा खूबसूरत था यहाँ, the proper river, as opposed to the Gangala. And say सारे colleges की boards होती हैं. Principal college क्या थे, government college actually, government college, NU college, Islamia college, engineering college, SC college, King Edward's Medical College, एक और जगह, उनकी boards होती हैं. सारे college teams, because they were voting teams, so they had competitions like regattas they have in England and so on and so forth. So obviously, British culture had a lot of influence in this part of the world. और so वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो वो सारे सिलसिले खत्म हो गए सारा कुछ. एंड ये क्या उसको कहते हैं कि I just didn't want to lose the thread what I was actually talking about. So like building civil military design, and like that they did in Karachi. And ये सारी ये जो सड़क आती है सिमला पहाड़ी से जो डेविस रोड से, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत पुराने घर थे. दुनिया जहान में लोगों ने प्रिजर्व की हुई चीज़ें, वो बना ही नहीं सकते इस तरह की चीज़. They cannot make it. Look at the architecture, present day architecture जो बना. I mean, like it is. I mean, it looks like Dubai. This is not Dubai. It's an agricultural country for the last 3,000-4,000 years. Things grow here. And, but, so this city was once, it was set, then it was just ransacked. Then it never stopped. Then it just never stopped, it just went on and on. We were after development करनी है, so by all means do the development. वो कहीं और जाएगा. You don't have to actually put everything in the same place. That's not the case anywhere in the world. England में मैं इतने साल रहता रहा हूँ, and my wife had some real estate business for a while. I mean, you know, if जो घर पुराना है उसके अंदर से आप एक brick नहीं change कर सकते. You cannot actually take a brick up and put you in jail. They'll fine you. You cannot do that. You can maintain the place, और maintenance के लिए भी local government आएगी अपने बंदों से. They will not charge you. They will pay. They will do their bit. All you have to do is to inform them in case के अंदर एक राड आ गई, crack हो गया. They will turn up, they will fix it, and do it. But they will not let you do it. मेरा मतलब traditions को रखना बड़ा जरूरी है. कि लाहौर के अंदर बड़ी traditions है. हमारे सारे शहरों के अंदर चीज़ें हैं. I remember seeing Hyderabad when I was there. मुझे पता नहीं कितनी canals वहाँ पे आगे पीछे जा रहे हैं. I went to Hyderabad in the 90s. I threw up. I was not acclimatized. मैं अभी बात से आया था. वो air was so polluted. I threw up. And he was, I couldn't believe it was the same city. क्या वो उसके पुरानी घर जाके देखें. I mean, they cannot make those places anymore.
Lahore शहर के जो गाते, they cannot make them anymore. They don't know how to. I was filming, my films are good, which unfortunately is signed by the government. And the thing is this, कि वो क्या उसको आप कहते हैं कि I was filming in the OC, पुराने घंटे में, इस महीने जून जुलाई के महीने में एक पंखा चला हुआ था, and I was cool because the places were built according to weather conditions. You know, बुलवा रहे हैं ये लोग सारा. तो जब ये चीज़ें मौजूद हैं आपके पास हैं सारी, so you know like it's democratic सारा कुछ, so and it has a lot of effect. You know, when लोगों को अगर पता ही ना हो and they're oblivious, there's nobody who's told them about this. I mean, half the people going around in this country don't have the foggiest idea of what happened before them, because most of the people were born during the time of Mr. Sharif or Mr. Bush. They have no knowledge beyond that. And that's unfortunate, because there is no mechanism in our system that will actually inform people. So they have some sense of their own history and traditions and so on. And abhi, what else can I say? I mean, you know, the thing is this, they talk about tourism and so on. Now, I have traveled this entire country from head to foot and sideways. मैं तकरीबन डेली मेरी गाड़ी होती है, मेरा लॉग होता है, साथ में लिखता हूँ, आज मैं इस जगह पर रुका था, अभी इस जगह पर रुका था, ये हुआ था, वो हुआ था. I write every day. If I'm gone, I talk to 5 people, I talk to 5 people. एक फार्मर था, एक की साइकिल की दुकान थी, एक का ये था, एक सेलफोन्स बेचता था, एक था. So, you know, 1 year afterwards, I look at it and I know exactly what happened and I can write it. But the thing is this, that population ऐसे करके स्वेल. हमें याद है अयूब खान के ज़माने में मैं स्कूल में था, कॉलेज में जाने वाला था, तो like they were here and also they started this family planning business. And घर में बातें सुनने को मिलती थी through uncles जो गवर्नमेंट में होते थे सारे, and my dad was doing some ideas for them and so on and so forth. And the television होता नहीं था, तो obviously there were some big billboards out there on the street. बड़ा एक healthy looking खुश देहाती couple, 2 बड़े healthy बच्चों के साथ इस तरह करके उनकी तस्वीरें बनी हैं कि जी 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें. और लोगों की मेरे ख्याल में ये अकल में आ गया था, because like you know if I have memories, so I write about them in my notes, so I don't completely, they're not erased. So after 1 month, if I'm looking for something, I can actually rely on my own accounts and either memories or actually experience things. So it worked. And then I asked questions. I asked questions to my uncles many years afterwards, many years afterwards. जो कि गवर्नमेंट में थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, हायर पोजीशन के अंदर. मैं कही चाचा जी ये क्या सिलसिला है? भाई ये बड़ा सक्सेसफुल था प्रोग्राम कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का और एजुकेशन का था. एजुकेशन जो हमारी थी, ये स्कूल जो थे यहाँ पे बहुत अच्छे थे, द बेस्ट like anywhere in the world. And so I am very grateful that I actually had the benefit of that. My generation people had the benefit of that. And I was with, I mean, a lot of foreign families lived in this country, in this town. वो कोई कॉन्शियस नहीं होती, छोटी सी दीवार होती थी, चौकीदार छड़ी लेके बाहर बैठा था, नीचे इसका से सिगरेट लेता था, सिगरेट चला लेता, फिर आपने गड्डी सी टूटी थी, 10 निशान. There was nobody with guns. And you know, like the women would go around the सारी local shops के अंदर शॉपिंग वगैरह करती थी, सारी सभी लोग उसके बाद कोई 150, 200, 300 बंदा यहाँ पे रहता था. Germans, British, French,
Americans. Americans काफी थे because Pakistan had a very big alliance with the United States. And during our time, there was like they had the air base in Mudbear outside Peshawar. U-2s jab पे base थे, fly करते थे spy planes. One was shot down over the Soviet Union. You may have heard Gary Powell's famous thing, and so on and so forth. Khrushchev got worked up and so on. But you know, it was a very easy place. There was like there were 4 buses that used to come down every year, full of tourists. इधर लाहौर में रुकती थी, आगे भी जाते थे इंडिया तक, बट लाहौर में बड़ी लंबी स्टे होती थी. ये YMCA जो है आपका, वो बड़ी रौनक वाली जगह थी. वो सारा एरिया जो है वो आपका जो यूनिवर्सिटी के मेरे पास है सारा वो टॉरेंटल मार्केट एक्सेट्रा, वो Lennox Coffee House, Park Tea House, वो कहते थे, वो सब King Edward's Medical College. He was you know, very pleasant kind of like atmosphere generally. और फिर जो बड़ी vibrant Anglo-Indian community थी, very vibrant, just amazing people. Some of them look like Europeans, some of them look like us, etc., etc. And they had major contribution. I mean, you know, अगर तो मेरी जनरेशन के लोग 100 दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करें तो काफ़ी नहीं होगा. ये एजुकेशन, the way they taught us. They were brilliant teachers, amazing teachers. I mean, they were Christians, Roman Catholics, but they never actually forced any kind of religious ideology in our heads. They just talked about them and things like that. And they ran the railways. So, you know, railways worked perfectly. और ये जो railways हैं, ये अंग्रेजों ने फेंके हुए थे इस तरह, because they had no idea, the people, that suddenly they were going to be told wrap up everything in 1 year and go back. They had no idea. मेरा मतलब है कि मुझे याद है मेरी जो दादी जी उसके घर जो अंग्रेज हो के वाक़ई थे काफ़ी, जो यहाँ पे रहते थे. And एक दफ़ा जो मैं कई दफ़ा जो like I would go to ये मुस्लिम टाउन की जो कनाल है, वहाँ पे 2-3 घाटे से सारे, बाकी फार्म्स थे काफ़ी सारी. लाइन चुंगी से लेके इछले का कोई आबादी नहीं थी. There were few houses and farm places. दूसरी बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ क्या होती थी कि I mean you could not actually ride a bicycle, रेरा or cart without a light. We couldn't ride a bicycle at night without a light. There was a law. There was something called law. And we were aware of chalana. You see, और ये दूसरा ये कि वो law होता है, it's optional. You know, आपकी बेटी को ये करना है, खाने जाना है. So like the thing is this कि ये सारे शहर में मुलायम से लेके मॉडल टाउन तक आबादी कोई नहीं थी, but footpath was like the way. You could actually walk this entire city on a footpath. इधर से आप अगर मॉडल माल रोड पे चले जाए तो आप पूरा वो सारा का सारा नस्मी चौक का एरिया, उत्तर रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी या पीछे खाने से आता सेपरेट रोड पर खाली फुटपाथ पर. Footpaths are non-existent. You know, footpath है ही नहीं. One of the very few countries on the planet जहाँ पे footpath है. I mean, you know, you go to cities, people love traveling. They go to cities where they can actually walk. I mean, you know, I've had the privilege of actually traveling pretty much half the world. काफ़ी सारे मुल्कों में under working conditions, either as a journalist supporting microphones or मेरा मतलब कि और actually doing my work, working on film productions. And what surprised me was like countries like Thailand and Singapore and places like that. I've not spent a few days in Singapore, but just I don't like the place. But like मेरी याद है बचपन में मेरे स्कूल टाइम पे ये जगह मुझे एक I was actually I remember एक
लिखना था, ऐसे लिखना था मुझे, एंड कोई जियोग्राफी के ऊपर कोई, एंड मैंने कहा कि सबसे आसान चीज़ जो है जिसको किसी को पता ना हो, टीचर को किसी बैकग्राउंड में मैं लिख देता हूँ कोई थाईलैंड, मलेशिया के बारे में, तो these are countries I just discovered, मुझे पता ही नहीं था उनके नाम है. So then I suddenly discovered तो घर में किताबें बहुत. My house was like a library. I think we had got, my dad had got 3,000-4,000 books in the house. Magazines वगैरह. इस शहर के अंदर book shops बहुत सारे. There were lots of bookstores in this city. Magazines, जितने भी recent magazines होते थे ना, वो टेक्नोलॉजी के, साइंस के, आर्ट्स के, फैशन चीज़ों के, जस्ट जनरली लाइफ मैगजीन, पीपल, दिस दैट एंड अदर, और फिर फारसी की पब्लिकेशंस, फिर अपनी पब्लिकेशंस मिला के तो बुक स्टोर्स बहुत सारे होते हैं. बहुत सारे लोग एक्चुअली किताबें, माल रोड की किताबों की दुकानें करते हैं, वाइन शॉप्स भी काफ़ी सारे. मेरा मतलब इतने लोग ज़्यादा नहीं पीते थे जितने आप पीते, फॉर इंस्टेंस, बिकॉज इट वाज ओपन. आई मीन माल रोड के ऊपर कोई 9 वाइन शॉप्स थी, कोई 10 बार्स थी. Every restaurant is a bar. And Fridays go, if you were in the area like Mall Road area, so you would just hear music. Because ये जो assembly chambers की building है, वो अलफला building जिसको कहते हैं, उसके पीछे एक नाइट क्लब थी, बड़ी मशहूर नाइट क्लब थी, उसका नाम भूल गया. तो वो डबल डेकर बसें होती थी. So you could actually see वो अंदर डांस बैंड होता था, सारा कुछ एक्सेट्रा. ये तो सारा आपका ये जिना लाइब्रेरी है, उस कॉस्मोपॉलिटन क्लब, they had then प्लाजा सिनेमा के ऊपर Marsden Kennedy's School of Ballroom Dancing, and then on the other side of the Rosan building there were some very pretty restaurants there. वो carbon copy like present day Los Angeles के अंदर उसका रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट का नाम था अर्जेंटीना, वो मेरे डैड का फ्रेंड था मिस्टर लोधी, उसका रेस्टोरेंट था. असलम परवेज एक्टर जो होता था उसका बड़ा भाई था. They were from a very good family and things like that, and he was a very kind of cultured human being, and he had this beautiful restaurant. उसकी बार टेरेस थी, ओपन टेरेस थी और things like that, and so म्यूजिक होता था. तकरीबन हर रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप या टी शॉप के अंदर पियानो जरूर होता. ये सामने जो मस्जिद शुहदा कहलाती है, टैक्सी लैंड होती है, यहाँ पर टैक्सियाँ रुकती थी, और वो टैक्सीज होती थी अमेरिकन गाड़ियाँ, प्लेमथ सेंटर, बड़ी गाड़ी, जापानी गाड़ी को नहीं होती. हम तो जापानी टॉय भी नहीं देते थे, ऊपर 2 नंबर टॉय, जापानी टॉय. एंड सो द थिंग इज दिस कि वो मस्जिद शुहदा बनी है इस तरह से कि आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट. हम ये स्कूल से आ रहे थे वापस माल रोड. We had actually stopped bicycles पे, इधर ये जो टॉरंटन मार्केट है वहाँ पे हमने रुके, कुछ हमने कोई जूस पिए हैं, कुछ करके 3-4 लड़के थे, एंड वी वर कमिंग ऑन बाइक्स, एंड वहाँ पे डीजल सिनेमा के चौक के ऊपर मेजर टाइम्स ने हमको रोक दिया. वहाँ पर ट्रक लोग खड़े हुए थे, पहुँच गए, और वो दूसरी साइड के ऊपर एक हाउलिंग मॉब बहुत ही. And that was some movement. I think that was कोई युगान के पीरियड में कोई था वो, I don't know what पाकिस्तानी कोई, I don't know something like that. तो उसमें मुझे याद है मेजर ने लाइन क्रॉस की है चौक के साथ सड़क पे. उसने कहा जिसने जन्नत में जाना है वो ये लाइन क्रॉस कर. उन्होंने लाइन क्रॉस की है तो सोल्जर्स ओपन फायर. तो 3 या 4 गोलियां चल रही ठक ठक ठक. वो जो लोग दौड़े बीटन रोड के अंदर, मैंने देखा है, वो मेजर ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हमको उतार दिया साइकिल. टैक्सियाँ खड़ी, गेट अंडर द टैक्सीज के नीचे से दिखे. तो लाइक बीटन रोड पे ऊपर से औरतों ने ईंटें मार दौड़. आई रिमेंबर. सो देन इट बिकेम, वो मस्जिद बन गई. One incident that I wrote about recently, I remember that very well. बीडन रोड के चौक के ऊपर एक फ्रूट की दुकान, वो ओपन में रखा था,
दुकान नहीं थी उसकी, 2-3 रेडियाँ थी। वो पहलवान था जहाँ बैठता था, प्री पार्टीशन बदमाश था, पर उस तुम्हारे माँ थी जो वो बहुत टाइप की थी, नॉट लाइक इसको wrestler भी था, very very strong. I was very kind to the students who were in sports. We were in sports, and so saying you do so the chance and my agro settle or sala karte, and he was a very honorable guy. He only didn't like it. I remember that एक दिन he was हम गए हुए थे, खड़े हुए थे बाहर उसके, waiting for a friend to join us, who was this guy Lobo's son. लोगों की दुकान थी, आपकी शायद है दुकान तो है वहाँ पर, इस कॉल लोगो और उसके साथ असले की दुकान अभी वहाँ पे, एंड लोगों की दुकान, लोगो पियानो, was 2-3 floors of pianos, and we were waiting for him to come out so we could go out and just walk around and go to Rock's Garden, something just लड़कियाँ जा रही थी सबकी, लड़कियाँ बड़ी खुली रहती थी, यहाँ पे कोई मसला नहीं था। एंग्लो इंडियन लड़कियाँ थी, फॉरेन लड़कियाँ थी, हमारी लड़कियाँ थी, एंड मूवीज पे जाती थी बेशुमार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 लड़कियाँ जा रही थी, तो गुजरी हैं वहाँ से, तो वी न्यू द पीपल, फोर्ड क्या उसको कहते हैं आप, क्या नाम था उसका, थंडरबर्ड, नई गाड़ी आई हुई थी स्पोर्ट्स टाइप, वो 2 लड़के थे, वो मच ओल्डर देन अस, देन व्हेन वी न्यू ऑफ देम, दे ऐसे करके उन्होंने 2 चक्कर काटे इधर। झारा पहलवान अपनी असले की दुकान से बाहर, सफ़ेद शर्ट उसने पहनी होती थी, सफ़ेद धोती, बिल्कुल नीट, उसने देखा है लड़कों को चक्कर लगा के उसने गाड़ी शुरू की। He was very rude to us. He said, how dare you stand there not saying? हमने गाड़ी खड़ी की, come on. बात नहीं argue with him. इधर SP होता था लाहौर के अंदर, Irish guy called Devlin. वो पंजाबी वाला फ्लोट होता था, like most of the English who lived there, except for my grandmother. I mean, she could understand it, but she could like most English, she would just not have very bad accent. पर्सनल कॉल उर्दू का सारा था, उसको समझाती कभी अपनी मेड को भी एड्स में काम है, डोंट ड्रॉप था, फिर ऐसे होता है कि कीरी हो जाता है, यू डोंट डू दिस काइंड, दैट्स व्हाट हर लैंग्वेज वाज लाइक। बट द थिंग इज दैट टिबलेट ने अपने बेटे को अंदर कर दिया था, जिस बेटा वो 7 क्लास का, फॉर डूइंग व्हाट, फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक, तो लाइट से एक क्रॉस का जो लाइट भी वो सफाई खड़ा होता है, स्विच ऑन ऑफ करना, एंड उसने अपने बेटे को अंदर कर दिया, एंड 4 दिन को बाद निकाल लिए, टिबलेट करना, वो लड़कियाँ चली गई, उनको पता ही नहीं क्या हुआ, एंड उन्होंने टिबलेट ने कहा कि इसको आप जाने दें, आई विल डील विद दैट, ही सेड नो। He said something which actually stayed stuck in my head. He said, "In उन्हें पता नहीं है साढ़े शहर में कुड़ियाँ कि कितों आए, साढ़े शहर में कुड़ियाँ, can you imagine that? There were hundreds of girls who used to go to school and colleges on bikes. वो आपको लेडी bicycle ही नहीं नजर आती. Every morning. Hundreds, like bicycle के ऊपर वो कॉलेज से स्पोर्ट्स करनी है, वापस आना, कोई गाड़ी नहीं देख रहा होता बैठ के कि शाम पड़ गई है, 7 बज गए हैं, आई नहीं वापस गई, you know, like there was nothing like this. And so then it didn't take long to actually things to start getting a low. मेरा चलान हो गया साइकिल का, विदाउट लाइट, घर पे कोई नहीं था, हवलदार आया चलान ले घर पे बाइसिकल, मैं अकेला था घर पे, वो मेरा मतलब ये जो घर पे बंदे काम करते थे वो भी कोई नहीं, एक मेड थी घर पे, उसने मुझे आगे मेरा पूछा करके, मैंने कहा मैं
उसने कहा आप अंडर अरेस्ट है। और मैंने चलान का परवाही नहीं की, मैंने कहा बाइसिकल का चलान विदाउट लाइट। मैंने मेरे दादा ही कर गए हुए थे, मैंने फोन कराया, माय cousin who was much older than me, a major in the army, he picked up the phone. I go, बाबा जी से बात करा, फिर सिपाही मुझे पकड़ने की गए। He said, how come? मैं कहा मेरा चलान हुआ। तो बाबा जी he talked, he said, put him on the phone. I put him on the phone. वो कहते ठीक है सर, कहते चल, उसको बात करने उन्होंने कहा कि आपको जेल में खाया। My grandfather said, why did you take the law? जब आपको पता है कि आपने लाइट के बगैर नहीं चलाना, आप क्यों गए? Can you imagine somebody telling their child today? वो कहेंगे कि जुड़ी कैसे हुई, इसको मारेगा पुलिस वाले। So the point is this, this is the kind of the atmosphere. It was not that things did not exist. It was not that there was a civic sense. It was not that there was cleanliness. It was not that there was beauty all around. It was not that there was actually fantastic education around. Education was mess up. This happened in the government of the family of Awam. Everybody who came here and played games with experimental things. I mean, education के अंदर चंद changes, obviously British period की education उसके अंदर चंद British propaganda की चीजें थी, उनको आप minus कर दें. Why do you want to screw the entire education thing? And why do you want to actually minimize your people from, make it impossible for your people to actually gain knowledge? I mean, it's a gift if people can speak several languages. Diversity है, यहाँ पे तो वैसे ही advantage है, लोग फारसी बोलते हैं तो फारसी बोलने बंद करा, आप पश्तो बोलते हैं तो पूरी तारीख है पश्तून लोगों की, एक कल्चर है, एक डिटेल्स है, म्यूजिक है, पोइट्री है, उसका जिक्र कौन करता है? You don't talk about that, except if you go to Peshawar, you will hear somebody TV के ऊपर को पश्तो में बातें कर रहा है. But and then there is Punjabi, there is Hindi, there is just diversity already in languages. So if your people can speak 10 languages, fantastic, why not? अगर एक ज़ुबान आपके पास एक इन्फ्लुएंस है, मेरा मतलब एक तारीख में आपके एक इन्फ्लुएंस है, I mean, the fact is that Britain ruled this country for over 100 years. That's a reality. That happened. 100 साल हुकूमत की है और बड़े तरीके से की है. They didn't do anything new. They just took over the Mughal system and modernized it. Same system. And people in this part of the world didn't have a chance. They didn't have standard prayer. It was between either the British or the French. Because उनका mindset आगे निकल गया. It had nothing to do with weapons. To do with how people think. I mean, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड के अंदर ही उधर से अंग्रेजों को मार पड़ी, अमेरिका से बाहर निकाला, इधर उनको एम्पायर में. And how did they end up having everybody, every European country had an East India Company. I mean, Portuguese had an East India Company. The French had an East India Company. The Dutch had an East India Company. It was just that Britain had more clout and the most powerful navy because they had defeated the Spanish Armada, the biggest navy in the world. And इधर का इलाका जो था, इधर वो लोग जो थे, they were not seafaring. They were nomadic warriors, like a Tughril. उसी क्लैन के लोग थे. ये जो सुलेमान शाह था, ये खुरासान से क्या था? तुर्की. They made that country. It was called Rome. Jalaluddin Rumi, because Genghis Khan के हमले से दौड़े बाप के साथ. Rome में, because of the Roman territory. So like these Turkic warrior clans from Fargana Valley, from Khorasan, converged. I mean, it's Seljuk clan of Kabul, Central Asia, the biggest empire the world had known.
actually was the Khorasan Empire. I mean, it was the biggest empire on planet Earth in the 11th century. After next was the Chinese Empire, the Qing dynasty, the Golden Dynasty. But the Chinese were not as powerful like the Saljits of Khorasan, because they were warriors. And a very fascinating tariq is region. And we, through our wisdom, have decided to remain cut off. We have, in our wisdom, decided that our children, younger people, should have no knowledge. This is our wisdom. So it's 50-minute flight from here to Uzbekistan. My actual family migrated from Fergana Valley, Uzbekistan during the war. A bloody war, because we got documentation. We got Shajara, which actually old parchment papers. British Museum people turned up, asked my mother, the family to sell it, they refused. They actually वेस्ट में काट के देखे गए, उसके अंदर 400-500 साल पुरानी तरीके लोगों की लिखी हुई, and our name became Peer because some of them were actually spiritual people. They were not like the various types, but they were knowledgeable people who actually preach spirituality and stuff like that, and then they would go to Kashmir, but most of them were warriors, actually. And my Dadi was born in Khorasan, they migrated to Uzbekistan and Kashmir and so on. But the thing is that in Tariq जो है सारी interlinked है. You just feel boundaries are man-made, and cultures are it's ये लोगों की bloodlines है, लोगों का DNA है. Cultures, your cultural connections, your like Iran. I mean, it's such a shame that we have 500-mile border. I mean, like, when Pura Balochistan was stripped right here, Pura, right next to Iran border, all the way down to Goa. I'm saying 7 years back. And when Pura Mulk is right here, Pura Mulk photograph, Balochistan photograph here, never told photograph, I'm one of the very few male people who can able to photograph women in these environments and talk with them, ask them questions and take pictures. Very privileged. Very, very highly privileged. I honor that a great deal. And I just always had admiration for them. Just admiration for them and their resilience and their actual real soul within them. They're good, no question about that. Deprived of every benefit in life, taken over by more. इतना भी शेयर नहीं कर पाता. And और ये करना है. विमान का दर्जा बहुत बड़ा होना चाहिए. Basically, if you actually follow the line of the Prophet of Islam, I mean, I don't want to be religious or any such thing. But the point is this, that so many people are nationalists in the Islamic Republic and so on, so there are so many mosques and that people pray 5 times a day and so on and so forth. So, I mean, the thing is this, that being Muslim actually places some responsibilities on you as a human being. And you cannot be sort of saying yourself that but that's the way it is. And it shouldn't be. It's in the hands of people to actually change things by the way they act, not through violence. That's not a way out. But the thing is that, people have to be, young people, must be exposed to knowledge. I mean, it is the duty of people to actually inform people, like actually excite their imagination. So, उनका जो stagnant imagination है, वो चल सकते, उसके वो current आ सकते. I mean, so they can actually go out and develop things and do stuff which is interesting, which benefits.